हेलो एवरीवन, दिस इज देबाशिश मिश्रा। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। पार्ट 1 आ चुका है, पार्ट 2 आज मैं बना रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन में 40 क्वेश्चंस बनाया हूँ, if you'll go to any type of interview, any type of viva, and for your knowledge, it will definitely help you. And if you are B.TECH, if you are M.TECH, if you are ITI, if you are a diploma, no matter, it will definitely help you if you want to know basic electrical engineering, basic questions of electrical engineering. If you are going to pass out any type of campus, you will find such type of questions. Any type of lab, any type of comprehensive viva you will find such type of questions. पार्ट 1 क्वेश्चन को जाकर देख लो। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ। प्लेलिस्ट बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टेप बाय स्टेप, यू कैन फाइंड ऑल द क्वेश्चन। और मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बनाए हैं, जैसे सुपरपोजिशन थ्योरम, नॉर्टन्स थ्योरम, थेवेनिन्स थ्योरम, ओम्स लॉ, यू कैन चेक ऑल्सो। एंड जो पार्ट 1 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जाकर थोड़ा चेक कर लो। वीडियो शुरू करते हैं। What are the merits of AC over DC? मैंने जो पहले जो पार्ट 1 में बनाया था क्वेश्चन, वो DC के ऊपर था। आज जो 40 क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करेंगे वो AC के ऊपर होगा। फर्स्ट क्वेश्चन, what are the merits of AC over DC? High voltage AC can be produced easily. You will explain in this manner. And AC can be transmitted across long distance without much energy loss, unlike DC. Second point. Third point is AC is less expensive in comparison to DC. Complete. Going to the second question. What is meant by cycle? एक बहुत important question है। The variation of alternating quantity through 360 degree is called a cycle. मैं थोड़ा बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ तुम लोगों को। This is your AC. This is 0. This is pi. This is 2 pi. This is called cycle 360 degree. 0, 180, 360 degree. This is called your time period. Total time period. This is called your positive half cycle. This is called your negative half cycle. Two half cycle combines gives one cycle, one positive cycle, another one is negative half cycle. Positive half cycle, negative half cycle, total is full cycle. Total, this is your time period. Clear, students? Going to the next question. What is meant by frequency? Maximum time this question arises. Definition is the number of cycles completed per second is called frequency. And you know we write F for frequency, and in Indian frequency that is 50 Hz. Maximum time question arises. What is the Indian frequency? It is 50 Hz. Going to the next question. What is the unit of frequency? Remind it. This Hertz. Unit of frequency is Hertz. What is meant by time period? I have already discussed. The time taken by an electrical wave in completing a cycle is called time period, and T is equals to 1 by F. Time period is inversely proportional to the frequency. T is equals to 1 by F. I think we will clear. Going to the next question. Define amplitude. वो भी एक important question है, मैं समझा देता हूँ तुम लोगों को। The maximum value of alternating quantity in a positive or negative direction, that is called amplitude. समझा देता हूँ तुम लोगों को, इसको डिलीट कर लेते हैं। एम्पलीट्यूड क्या होता है? This is amplitude. This is amplitude. This is your amplitude, and this point is your peak value. This is your peak value.
and this is your amplitude. Clear students? The maximum value of an alternating quantity in a positive, the maximum value in a positive or negative direction, that is called your amplitude, and this point is called your peak. Clear? Define peak value. The maximum rise and AC voltage or current in a cycle is called its peak value. Already मैं define कर चुका हूँ. What is meant by instantaneous value? It is also very important. The magnitude of alternating quantity at any instant is called its instantaneous value. समझा देता हूँ मैं क्या है instantaneous value. देखो, this is your cycle. Okay, definition पढ़ो. The magnitude of alternating quantity at any instant is called its instantaneous value. Clear students? Going to the next question. What is meant by average value? ये बहुत important question है. The average of instantaneous values of alternating quantity in half cycle is called average value of AC. V average or E average you can say 0.637 V max और E max. अगर इसका डेरिवेशन चाहते हो तो जो मुझे कमेंट करके बताओ, मैं इसका डेरिवेशन कर दूंगा, तुम लोगों को इजी हो जाएगा. लेकिन अभी इस डेफिनेशन को याद कर. What is meant by RMS value? RMS means root mean square. The root mean square of instantaneous value is called RMS value of AC. So E RMS or you can say V RMS is equals to 0.707 E max. इसका भी डेरिवेशन है. अगर चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बताओ, मैं उसका डेरिवेशन कर दूंगा तुम लोग. What is meant by phase? ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए. The comparative representation of two alternating quantities is usually referred as phase. The comparative representation of two alternating quantities. Suppose voltage and current. You can take two alternating quantities. Voltage and current is usually referred as phase. What is the form factor? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. मैक्सिमम इंटरव्यू में तुम लोगों को पूछा जाता है व्हाट इज फॉर्म फैक्टर. सिंपल तुम लोगों को कहना है आरएमएस वैल्यू बाय एवरेज वैल्यू. आरएमएस बाय एवरेज मैं थोड़ा लिख के बता देता हूँ तुम लोगों को कैसे, अगर एग्जाम में आता है तो कैसे लिखना है. सिंपल लिखना है आरएमएस बाय एवरेज. आरएमएस बाय एवरेज सिंपल definition है. Form factor is the ratio between RMS value and average value. Value is 1.11. अगर इसका भी डेरिवेशन चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताओ, मैं बता दूंगा तुम लोगों को. What is the peak factor? Peak factor is the ratio between peak value and RMS value. Value is 1.14. What are the principal components of AC circuit? पहले तुम समझ लो डीसी का क्या है. रेजिस्टेंस, सिर्फ रेजिस्टेंस. और अगर एसी पार्ट आ जाएगा तो इंडक्टर आ जाएगा, कैपेसिटर आ जाएगा एंड रेजिस्टर. ऑल दिस थ्री आर द प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ एसी. बट अगर डीसी का पूछा जाएगा तो तुम बोल सकते हो ओनली रेजिस्टर, इंडक्टर कैपेसिटर नॉट. व्हाट इज एन इंडक्टर? अगर पूछा जाएगा क्या है इंडक्टर, देयर इज ए ह्यूज डिफरेंस बिटवीन इंडक्टर एंड इंडक्टेंस. सो आई विल से व्हाट इज इंडक्टर. Any conductor or coil having inductance is called an inductor. So what is inductance? Inductance is the property of AC circuit that opposes any change in the amount of current. Remind it, inductance is the property of AC circuit that opposes any change in the amount of current. Whenever capacitance will be there, so you will write any change in the amount of voltage. So inductance is the property of AC circuit that opposes any change in the amount of current. Capacitance is the property of AC circuit that opposes any change in the amount of voltage. Going to the next question. What is the unit of inductance? It is Henry. Mind it, very important question. What is self induction? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है. When an alternating current causes an EMF, electromotive force, to be developed in the coil itself, the phenomenon is referred as the self-induction. Very important question. What is mutual induction?
कभी कभी पूछा जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन, बता देता हूँ। म्यूचुअल इंडक्शन क्या है? व्हेन एन अल्टरनेटिंग करंट कॉजेस एन ईएमएफ टू बी डेवलप्ड इन द सेकेंड कॉइल, द phenomenon is referred as mutual induction. It is denoted by M, the unit is Henry. So ट्रांसफार्मर में, जैसे ट्रांसफार्मर में हम लोग यूज करते हैं टू कॉइल, सो क्या होता है? when an alternating current causes an EMF to be developed in the second coil, primary coil to secondary coil, जैसे EMF जनरेट होता है, सो म्यूचुअल इंडक्शन ट्रांसफार्मर में, ट्रांसफार्मर का जो रूल है वो म्यूचुअल इंडक्शन को फॉलो करता है। सो म्यूचुअल इंडक्शन का डेफिनेशन यू कैन से व्हेन एन अल्टरनेटिंग करंट causes an EMF to be developed in the second coil, the phenomenon is referred as the mutual induction denoted by M. How EMF is induced? When a current carrying conductor cuts the magnetic line of force and EMF is induced, or vice versa. So a current carrying conductor जब मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को कट करता है तो EMF इंड्यूस्ड होता है। ये भी बहुत सारे इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। Going to the next question. What is meant by inductive reactance? XL. The opposition offered by a conductor to the flow of AC through it is called inductive reactance, and XL is equals to 2 pi FL. 2 pi is 3.14, F is the frequency 50 Hz, L is the inductance. Question पूछा जाता है calculate XL, calculate L. So you can calculate the value by putting the value. Everything will be given. You have to calculate the inductive reactance to 3.14, frequency हमको पता है 50, L का वैल्यू गिवन होगा, सो यू कैन कैलकुलेट XL. अगर L का वैल्यू पूछा हुआ है, XL का वैल्यू गिवन है, सो वी कैन आल्सो कैलकुलेट. What is a capacitor? A system of conductors capable of storing electrical charge is called a capacitor. Very important. What is meant by capacitance? मैं बता चुका हूँ. Capacitance is the property of AC circuit that opposes any change in the amount of voltage. Just mind inductance, capacitance. Inductance is the change in the current. Capacitance is the amount of change in voltage. What is the unit of capacitance? We all know it is Faraday. How is the energy stored by a capacitor calculated? We know energy stored in a capacitor is E is equals to half CV square, and if it is a inductor, you can say half Li square. What is the formula for determining the total capacitance of capacitors connected in series? ये important चीज है, मैं तुमको बताऊंगा. 1/CT is equals to 1/C1 plus 1/C2 plus 1/C3. देखो ये बढ़िया टेक्निक बता देता हूँ तुम लोगों को. अगर रेजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज तो क्या होगा? R1 प्लस R2 होगा. अगर कैपेसिटर कनेक्टेड सीरीज है सो ये फॉर्मूला. तो थोड़ा मैं तुम लोगों को बताता हूँ क्या कहाँ पे तुम गलती कर देते हो, मैं बता देता हूँ. सपोज C1 इज गिवन 1, C2 इज गिवन 2, बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज. सो 1/C इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा? 1. सपोज इसको 2 ले जाओ, इसको 3 ले जाओ. सो 1/2 प्लस 1/3. सो क्या होगा? टेकिंग एलसीएम 2 into 3/2 plus 3. So it is 6/5. So 6/C equivalent is, और taking LCM 1 minute, मैं डायरेक्ट कर दिया इसको और एक बार बता देता हूँ तुम लोगों को. सपोज 2, 3, C1, C2 है. सो 1/C equivalent is equals to 1/2 plus 1/3. So LCM is 6. So it is 3 plus 2. So it is 5/6. स्टूडेंट लोग क्या गलती करते हैं, इसको लिख देते हैं 1/C इक्विवेलेंट इज 5/6. पर क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डिटरमिनिंग द टोटल कैपेसिटेंस और C इक्विवेलेंट? बट C इक्विवेलेंट इज 6/5. सो वो गलती मत करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. 1/C इक्विवेलेंट इज 5/6, बट क्वेश्चन पूछा जाता है क्या है C इक्विवेलेंट? इज 6/5. सेम हियर R इक्विवेलेंट.
Clear students? Then what is the formula for determining the total capacitor connected in parallel? क्या होगा? C1 plus C2 plus C3. Then what is meant by capacitive reactance Xc? So the opposition offered by a capacitor to flow of AC through it is called capacitive reactance, and Xc is equals to 1 by 2 pi Fc. Clear? What is meant by impedance? Z. Impedance is Z. Impedance is the total opposition of a circuit to the flow of AC through it due to resistance, inductance and capacitance, or either any of the three quantities. It is denoted as Z and unit is ohm. Impedance ohm. Define power factor. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. It is the cosine of the angle between voltage and current and denoted by cos phi. इसका बहुत सारे डेफिनेशन है, लेकिन ये मुझे थोड़ा इजी लगा, तुम लोगों को याद करने में भी ठीक रहेगा, सो मैं इसलिए ये डेफिनेशन दिया हूँ. इट इज द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट. तुम भी और भी डेफिनेशन यूज कर सकते हो, लेकिन ये सही डेफिनेशन है, इजी डेफिनेशन है. इट इज डिनोटेड बाय cos phi. What is meant by admittance? The reciprocal of impedance is called admittance. Y is equals to 1 by Z mho. mho क्या होता है स्टूडेंट? ओम का सिंबल ऐसे होता है, मो का सिंबल जस्ट ऐसे होता है. ये है ओम, ये है मो. याद कर लेना इसको, ठीक है. सो एडमिटेंस का यूनिट क्या है? मो. क्लियर स्टूडेंट्स? व्हाट इज मीन्ड बाय सक्सेप्टेंस? सो सक्सेप्टेंस क्या है? द रेसिप्रोकल ऑफ रिएक्टेंस इज कॉल्ड सक्सेप्टेंस. So unit is mho. Unit is mho. What is the power dissipation of a power inductive circuit? Unit is zero. What is the power dissipation of a pure inductive circuit? That is 0. What is the power dissipation of pure capacitive circuit? It is also 0. What is the power factor of a pure resistive circuit? It is 1. How power factor of an AC circuit is determined? So we know that P is equals to VI cos phi, and cos phi is P by VI. What is the impedance formula of a series RL circuit? Z is equals to R square plus XL square and unit is ohm. What is the impedance formula of a series RC circuit? Z is equals to R square plus X square and unit is ohm. What is the impedance formula of a series RLC circuit? Z is equals to R square plus XL minus XL square or root over ohm. Very, very important. How we will calculate the current of a circuit containing resistance, inductance and capacitance? So I is equals to V by Z, where Z is equals to R square plus XL minus XL square or root over. So simple, all this formula you will remember and you will solve all the problems. Okay. So इससे पहले अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर देना. कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताना. न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ऐसे न्यू अपडेट के लिए. सो थैंक यू स्टूडेंट्स. Please like, share and subscribe.